स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। अज असी PS टेट सिलेबस फॉर जो सैकेंड पेपर है वह जो सिलेबस है डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी गल करांगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। 30 क्वेश्चन होंगे। सब तो पहला जो 30 क्वेश्चन ने उन्होंने किवें डिवाइड किया गया। पहले जो 15 क्वेश्चन ने उन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट के नाल रिलेटेड। हुण असीं इहदे जिहड़े टॉपिक्स ने जो 15 क्वेश्चन दे विच कवर होने ने उहदे बारे गल करदे हां। Concept of development and its relationship with learning, principles of the development of children, influence of heritage and environment, socialization processes, social world and children, teacher, parents and peer groups. Piaget, Kohlberg ਤੇ Vygotsky, constructs and critical perspectives, concepts of child-centered and progressive education, critical perspective of the construct of intelligence, multidimensional intelligence, language and thought, gender as a social construct, gender roles, gender bias and educational practice, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Formulating appropriate questions for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing learner achievement. Next ਜਿਹੜੇ 5 questions ਨੇ inclusive education ਤੇ understanding children with special needs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ related ਨੇ 5 questions. ਇਹਦੇ topics addressing learners from diverse backgrounds including disadvantaged and deprived, addressing the needs of children with learning difficulties, impairment, etc., addressing the talented, creative, specially disabled learners. Learning and pedagogy, 10 questions होंगे. How children think and learn, how and why children fail to achieve success in school performance, basic processes of teaching and learning, children's strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning, child as a problem solver and a scientific investigator, alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning, personal and environmental. Now language 1 ਪੰਜਾਬੀ 30 क्वेश्चन होंगे। सब तो पहले जो 15 क्वेश्चन ने वो किस तरह के होंगे, किस तरह के जो क्वेश्चन ने वो आने हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज दिते होंगे, तो प्रोज के ड्रामा नाल रिलेटेड हो सकता है, पोएम नाल रिलेटेड हो सकता है, तो वो विचों जो ग्रैमर या वर्बल एबिलिटी होर जो क्वेश्चन ने वो पुट किए जाएंगे। नैक्सट जोड़े पंजाबी के 15 क्वेश्चन ने वो लैंग्वेज डिवेलपमेंट नाल होंगे। लर्निंग एंड एक्वेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, remedial teaching. 15 मार्क्स का सिलेबस सी। नाउ लैंग्वेज टू इंग्लिश, ये भी 30 क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रीहेंशन के विचों जिहड़े क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्क्स के ने। अनसीन पैसेज दिते होंगे जिन्हों के विचों डिस्ट्रक्टिव, लिटरेरी, नैरेटिव, साइंटिफिक ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रीहेंशन के ग्रामर और वर्बल एबिलिटी ये चैक की जाएगी। नैक्सट जोड़े 15 क्वेश्चन ने उन्होंने लिए टॉपिक्स इंग्लिश के नाल रिलेटेड ने, लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाल, लर्निंग एंड एक्वेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग,
function of language and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning, a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual, resource of the classroom, remedial teaching। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਨੋਇੰਗ ਆਵਰ ਨੰਬਰਸ, ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, negative numbers and integers, fractions, exponents, profit and loss, compound interest, discount, algebra, introduction to algebra, algebraic, identities, polynomials, ratio and proportion, geometry, basic geometrical ideas, understanding elementary shapes, 2D 3D ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, symmetry, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਸਰਕਲ, ਸਫੇਅਰ, ਕੋਨ, ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। 35 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਨ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਰੈਮੈਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, 30 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟੈਂਟ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ, ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫੂਡ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਫੂਡ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਫੂਡ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਫ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼, ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ, molecule, compounds, metals and non-metals, carbon, soil, acids, base, salt, the world of the living organisms, microorganism and diseases, food, production and management, moving things, people and ideas, effect of population growth and human activities on environment, the universe, force, motion, work and energy, electric current and circuits, magnets and magnetism, light, sound, natural phenomena, natural resources, sources of energy, environmental concerns, reasons and national pollution. Now content for 5 questions. Nature and structure of sciences, natural science, aims and objectives, understanding and appreciating science, approaches, integrated approach, observation, experiment, discovery, method of science, innovation, text material, aids, evaluation, cognitive, psychomotor, affective, problems ਤੇ remedial teaching।